Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's lecture is about comprehension and press writing. Comprehension means understanding or the ability to understand a writing. In examination questions on comprehensions, you are required to read given passage and then to answer the questions on them in your own words as far as possible. First of all, we will discuss what is précis. The term précis is derived from French word which means précis or expressed accurately. It also means an abstract or a gist of a longer passage. यानी कि इसमें आपने एक गिवन पैसेज होता है उसको आपने जस्ट उसका जिस्ट और मेन आइडिया जो समरी होती है उसको डिस्क्राइब करना होता है. Definition. What is the definition of précis? The précis is a clear, compact and logical summary of a passage. It only preserves the essential points of ideas of the original text. Just you have to give only essential points or ideas of the original text. There are 5 qualities of a good précis. Number 1 is clarity. Number 2 correctness, number 3 objectivity, number 4 coherence and conciseness. While writing précis, you are required to avoid some mistakes that you should avoid, and they usually occur in our while writing précis. Number 1 is misspelled words. Sometimes when the students write précis, they misspell the words. Mistakes in facts and figures. You are not expected to make any mistake in facts and figures of the text. Mistakes in punctuation. Mistakes while writing, you should take care of punctuations. Mistakes of grammar and structure. You are expected to write in correct and accurate grammar and sentence structure. So now we will see what we meant by clarity. Clarity means getting your message so that reader can understand easily what the writer trying to convey. यानी कि आपने उसको पैराग्राफ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और उसके मीनिंग जो है वो इस जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको इस तरह पढ़ने वाले तक पहुंचाने हैं कि वो समझ जाए कि राइटर का पैगाम क्या है. सेकंड इसका जो इसकी रिक्वायरमेंट रूल है दैट इज़ करेक्टनेस. sentences ought to be proper grammatical, punctuation and well spelled or free from any sort of error. Correct idea should be conveyed. Number 3 is objectivity. Objectivity means the ability to present opinions and personal preference. The writer should adopt an objective approach, not add personal opinion and ideas. While writing précis, you have just to make a précis of the given text. You are not required to give your personal opinion or ideas. Then there is coherence, hamahangi उसमें. Coherence means logical interconnection. इनकी जो ideas आप पेश कर रहे हैं they should be interconnected. Ideas should be well joined. Sentences should be interrelated. Conciseness. Conciseness means brief and direct. इनकी जो आप लैंग्वेज है précis की पैराग्राफ जो आप बना रहे हैं it should be brief and direct. Conciseness is a desirable quality of a good précis. Use concise expression. Avoid unnecessary repetition. Convey information clear and efficiently. There are some rules for writing a good précis. Number 1 is careful reading of the text, outline, understanding, underlining, omission, don't omit, length, indirect speech, own wording, avoid giving opinions, paragraph form, tenses and person, no change in meaning, art of compression, rereading and conclusion. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू वाइल स्टार्टिंग précis. आपने सबसे पहले क्या करना है कि यू हैव टू मेक अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ. फर्स्ट रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन until you understand the meaning of the passage. यानी कि आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है कि आपको जब तक उसकी समझ आ जाए. द मोर यू रीड इट द मोर फेमिलियर इट विल बिकम टू यू. ट्राई टू रीड इट
thrice to make its subject clear. कम से कम आप उसको तीन दफ़ा टेक्स्ट को पढ़ें गिवन पैराग्राफ को उसकी प्रेसी बनाने के लिए, ताकि आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाए. आउटलाइन. आफ्टर रीडिंग नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑफ मेकिंग आउटलाइन, कि आप उसका पैराग्राफ का आउटलाइन तैयार करें. यूजली वन इज़ आस्क्ड टू सप्लाई आउटलाइन फॉर अ प्रेसी. While reading the original passage, think of some words, phrases or short sentences that will sum up the main subject of the passage. इनकी given जो passage है उसके आप मेन जो उसका आइडिया है उसको सम वर्ड्स में, phrases और short sentences में करने की कोशिश करें. Find the key sentences. Key sentences से क्या होगा कि it will be helpful for finding the title of the paragraph. Understanding the paragraph. Read the passage attentively and try to understand the main theme of the passage. Try to get the idea of what the writer trying to convey. Underlining. It is also a technique. Underline is to mark the important ideas and essential points from the original text. यानी कि आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको रीडिंग करते हुए अंडरलाइन कर सकते हैं. ओमिशन. ओमिशन हज़फ करना, कम कर देना. और क्या क्या चीज़ें आप इसमें से ओमिट कर सकते हैं. ओमिट ऑल द अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन और लॉन्ग फ्रेजेस. इनकी आप प्रेसी बनाते हुए अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ओमिट कर सकते हैं. लॉन्ग फ्रेजेस को विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड, इनकी जिनका ऑप्शन वन वर्ड में मौजूद हो. ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन बी ओमिटेड इन ऑर्डर टू मेक अ गुड प्रेसी. कि आप एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स जो हैं उनको ओमिट कर सकते हैं अच्छी प्रेसी बनाने के लिए. डोंट ओमिट. बट while writing a précis, the writer should not omit the important points and ideas which are essential to be described. Length. Keep the fact in your mind that the length of the précis be 1/3 of the original passage. यानी कि आपने जो गिवन टेक्स्ट है जो उसकी प्रेसी के पैराग्राफ की जो लेंथ है 1/3 होनी चाहिए. काउंट द वर्ड्स इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ टू लॉन्ग. Indirect speech. Précis should be written in indirect speech. If there is direct speech in the passage, it should be changed into indirect speech. Own words. A précis should be written in your own words and should abstain from borrowing words from original passage. कि समटाइम्स स्टूडेंट्स टेक्स्ट के सारे वर्ड्स उठा के वही लिख देते हैं. तो इसके लिए रूल ये है कि यू शुड यूज़ योर ओन वर्ड्स वाइल मेकिंग अ प्रेसी. अवॉइड गिविंग ओपिनियंस. यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी कमेंट्स अप्रिशिएटिव क्रिटिकल ऑन द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज. इनके जब तक जिस प्रेसी में आपने क्या करना है कि अपने आइडियाज़, अपनी कोई भी ओपिनियन जो है वो शामिल नहीं करनी. जस्ट यू हैव टू प्रिसाइज द गिवन टेक्स्ट. सो अवॉइड गिविंग कमेंट्स और एनी अप्रिशिएटिव और क्रिटिकल आइडियाज़. इन जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस यू कैन गिव योर ओपिनियंस इफ़ यू आर आस्क्ड. पैराग्राफ फॉर्म. Then the form, how you have to write the précis. Précis should be in paragraph form. It should not be in form of dialogue. There may be one or more paragraphs in original passage, but your précis should be in only one paragraph. Try to write in one single paragraph. Tenses and persons. It is also the same as précis should be written in past tense, but in case of universal truth, present tense should be used. Always use third person while making précis. No change in meaning. While writing a précis, don't change the meaning of précis, but it should be written in your own words. Try to abstain from borrowing words from original passage. Art of compression. Compress and clarify a lengthy passage, article or book retaining important concepts. इनके आपने important concepts जो हैं उनको मेंटेन रखना है, लेकिन आपने जो इरेलेवेंट जो लेंथी चीज़ें उनको ओमिट करना है. कीवर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट डाटा शुड बी यूज्ड. क्रॉस आउट अननीडेड डिस्क्रिप्शन.
Rereading. After making a précis, you should reread the passage several times if necessary for clear understanding of ideas. Observe the emphasis or approach used by author. Conclusion. The conclusion should restate the main idea of the text and retreat the main support. Do not provide any new information. Remember to avoid any personal statements about the passage. Okay, these were the rules for making précis. And for answering the questions, some in the given paragraph, for read the answering questions, read the given passage carefully, underline or just remember the main idea or aspects of the passage, and read the given questions on the passage carefully. See which parts of the passage provide answers to these questions. Then write the answers in your own words, but as far as it is possible to do so, please see that your answers are to be to the point. It is often good to repeat the main words of the question at the beginning of the answers. Then there is also a question about providing a title of the paragraph. If you are asked to write the title of the passage, suggest it. The title should cover the main aspects or ideas of the passage. Your title may consist of some meaningful words from the passage. It is usually in the topic sentence or in the last sentence of the paragraph. Okay students, that's enough for précis writing and comprehension. But the most important thing is the practice. You must make practice of the given paragraphs in your grammar book. Thank you.